Welcome friends. Today we will learn about discrete Hilbert transform. Hilbert transform finds a companion function yt for a real function xt so that zt is equal to xt plus I. Yt can be analytically extended from real line t belongs to R to upper half of the complex plane. मीन्स कि जो रियल पार्ट है हमारे पास उसको हम कॉम्प्लेक्स सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वो हम उसको एक्सटेंड कर सके एनालिटिकली फ्रॉम रियल पार्ट टू अ कॉम्प्लेक्स पार्ट. In the field of signal processing, Hilbert transform can be computed in a few steps. Hilbert transform को compute करने के लिए कुछ steps हैं. First, calculate the Fourier transform of a given signal xt. Second, reject the negative frequencies. And third, finally, calculate the inverse Fourier transform, and the result will be complex valued signal where the real and imaginary parts form Hilbert transform pair. The Hilbert transform can be interpreted as a way to represent a narrow band signal in terms of amplitude and frequency modulation. Applications of transform. First, latency analysis in neurophysiological signals. Second, speech data compression for communication. Third, signal processing for auditory prosthesis. Now next is mathematical foundation for Hilbert transform. नाउ लेट f इज अ रियल वैल्यूड सिग्नल कि हमारे पास जो f है ये एक रियल वैल्यूड सिग्नल है और ये बिलोंग करता है r को. वी कैन फाइंड अ इमेजिनरी पार्ट ig सच दैट हम एक इमेजिनरी पार्ट ig फाइंड आउट कर सकते हैं सो दैट हमारा जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल है fc वो किसके इक्वल हो f प्लस ig. सपोज fx जो हमारा रियल पार्ट है दैट इज cos x एंड gx जो हमारी इमेजिनरी पार्ट है दैट इज sin x. Therefore जो हमारा कॉम्प्लेक्स सिग्नल होगा fcx दैट इज f प्लस ig इज इक्वल टू cos x प्लस I sin x एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ix. This function can obviously be extended analytically to entire complex plane by replacing the real value x with a complex variable z in the expression, where real part of extended function f of z is equal to fx for all values of z is equal to x, which states that a real part of extended function is equal to the original given function fx on the real line. The companion function gx is called the Hilbert transform of fx. Now next is the notation of Hilbert transform. The phase shifter interpretation of Hilbert transform leads to the fact that if fx Hilbert transform is gx, then gx Hilbert transform is minus of fx. In this sense, fx and gx forms a Hilbert transform pair. Second, Hilbert transform introduces a 90-degree phase shift to all simple harmonics. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास fx का Hilbert transform है that is g of x है और जो g of x का Hilbert transform है that is minus of fx. Means gx and fx are our Hilbert transform pair. और हम सेकंड चीज क्या चेक कर सकते हैं कि जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है वो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है इन ऑल सिंपल हार्मोनिक्स. नेक्स्ट इज application in signal processing. How we use our Hilbert transform in signal processing. First step of signal quantization involves sampling an analog signal xt at a constant rate fx is equal to 1 by t, where t is sampling period. So discrete time Fourier transform dtft is defined as x of j omega is equal to summation n is equal to minus infinity to infinity xn multiplied by e की power minus j omega n, where x of j omega is a periodic signal with period 2 pi in frequency domain. Discrete time Hilbert transform and Hilbert transform. Recall that Hilbert transform introduces a 90-degree phase shift to all sinusoidal components. The transfer function of Hilbert transform is defined as h of j omega is equal to minus j for all values of omega in between 0 to pi and j for all values of omega in between minus pi to 0. हमें ये याद है कि जो हमारा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है वो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, तो इसके कारण जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर फंक्शन होगा एच ऑफ जे ओमेगा उसकी वैल्यू
माइनस जी होगी फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसीज और जे होगी फॉर नेगेटिव वैल्यू फॉर वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी. Second, the convolutional kernel of h of j omega can be calculated through inverse Fourier transform. H of n is equal to 1 by 2 pi integration minus pi to pi h of j omega e की power j omega and d omega. That is also equal to 2 by n pi multiplied by sine square pi n for all values of n not equal to 0 and 0 for value n is equal to 0. हम टाइम डोमेन में अपने हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को पा सकते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन 1 by 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एच ऑफ जे ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा एंड डी ओमेगा. Thank you, and you can find the PDF of this lecture at website welearnandteach.com.